क्या पढ़ा था हमने वहाँ पे? हम्म Standing them, they could be by cutting them down, by creating financial value of carbon storage in trade. हम्म Need involves developed countries for paying to developing for their spending power. And Copenhagen conference put a strict emphasis on deforestation. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने रेड पढ़ा था तो उसमें क्या हमने बोला था? मतलब अगर किसी कंट्री के पास फॉरेस्ट्स है, ठीक, अमेजोन फॉरेस्ट है ब्राज़ील के पास, ठीक, वो उसको ना काटे बल्कि उसको एज इट इज़ रखे और उसका जितना फाइनेंशियल वैल्यू है, ठीक, वो हम उसको देंगे। रेड प्लस में हमने उनको कहा कि अगर आप इसके अलावा एरिया बढ़ाओगे भी, जो एरिया आप बढ़ाओगे उसका भी पैसा हम आपको देंगे, ठीक। उसी के बेसिस पे इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, कैंपा फॉरेस्ट्रेशन। कैंपा प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि अगर हमने किसी भी एरिया में कोई भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम करना है और उसके लिए हमें कोई फॉरेस्ट काटना पड़ेगा, उसी डिस्ट्रिक्ट में या उसी एरिया में हम उतने ही अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट्स या ट्रीज लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो गवर्नमेंट प्लान्स टू वाइडन दिस रोड, परेपुरा रोड, और इसके बीच में ऑलमोस्ट 60 ट्रीज आए, तो विद इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैज टू फॉरेस्ट 60 ट्रीज इन एनी एरियाज, ताकि बैलेंस मेंटेन हो सके। और उसी को करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बनाया कि जब आप यहां ट्री कट करोगे या रोड एक्सपैंड करोगे तो उस फंड का कुछ पोर्शन आपको एज इट इज रखना पड़ेगा, ताकि हम वो पैसा यूज कर सके एफॉरेस्टेशन इन दिस सेम डिस्ट्रिक्ट, ठीक, विद द सेम नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो इसका बेस था रीड, गॉट इट? ये और कुछ नहीं है, बस यही है, ठीक है। इसमें हमने क्या कहा कि इफ यू आर गोइंग टू deforest any area, if you are planning to cut any area in any portion, you have to implant same amount of trees in the same district, ठीक, within the same time frame, ताकि ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। और उसके लिए जब आपको किसी भी चीज के प्रोजेक्ट फंड मिल रहे और उसमें आपको ट्रीज कट करने पड़े, तो उस फंड का कुछ पोर्शन आपको अपने तक रखना पड़ेगा, ताकि वो आप यूज कर सकते हो उन ट्रीज को एफॉरेस्ट करने में, ठीक है। Write it down. Compensatory Afforestation Fund Management Planning Authority. Now under it write Forest Conservation Act 1980, Forest Conservation Act 1980, stipulates that the central government shall collect the amount from any user agency associated with deforestation for any activity to undertake compensatory afforestation
compensatory afforestation and other activities related to conservation and development of forests. So as to mitigate the impact of diversion of forest land. Paragraph. In 2004, central government set up CAMPA, which is a fund under Public Accounts of India. Now tell me, what are the three funds that are available to the government? The three funds. जोर से यार. और उसमें एक फंड, डिफरेंस क्या है तीनों में? इफ यू से देयर आर थ्री टाइप ऑफ फंड्स अंडर आर्टिकल 266, ठीक है? वन इज दिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, second is contingency fund of India, and the third is public accounts fund. What's the difference? Consolidated fund of India means any money to be withdrawn or put into it requires an act of parliament. For example, passing of budget. ठीक? तो बजट में दो बिल्स होती है, फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल. फाइनेंस बिल मींस दैट यू कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन द पीपल. अप्रोप्रिएशन बिल मींस यू कैन विड्रॉ द फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है? तो जब तक वो बिल ना पास हो सके, वो एक्ट पास ना हो सके, तब तक आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हो. उसके बाद कंटिजेंसी फंड होता है कि इसमें निकाल सकते हैं हम विदाउट द फर्स्ट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन बाद में, ठीक है, रिकन्फर्मेशन पार्लियामेंट चाहिए. क्यों? क्योंकि ये होता है इमरजेंसी के लिए. इमरजेंसी फ्लड्स आ गए, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो हम उस वक्त पार्लियामेंट का अप्रूवल का वेट नहीं करेंगे, उसमें टाइम लगेगा. तो हम पहले इसमें से निकाल लेंगे, फिर जब हालात ठीक होंगे फिर हम बिल पास करेंगे. और हमने कहा कि हमें इसमें पैसे डाले, किसके लिए? रीअप्रोप्रिएशन के लिए, ताकि फिर से इसमें पैसा आ सके. और पब्लिक अकाउंट्स फंड जो होता है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू चलता है. यानी कंसोलिडेटेड फंड से आपने पैसे निकाले 100 करोड़, ठीक? 100 करोड़ का एक साथ तो नहीं खर्चा करोगे ना, तो वो हम एक अकाउंट में रखते हैं जिसको हम डेली बेस पे यूज करते हैं, और वो रखते हैं हम पब्लिक अकाउंट्स में. ठीक है? पब्लिक अकाउंट फंड. और पब्लिक अकाउंट फंड में ही हम कैंपा का भी फंड रखते हैं, ठीक, ताकि हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको धीरे धीरे यूज कर सकें. This fund also allows states to establish state compensatory afforestation fund. Afforestation fund. Para.
The national fund, the national fund will be under central government, and will be managed by under central government and will be managed by CAMPA, Compensatory Afforestry Fund Management and Planning Authority, and will be managed by CAMPA. Full stop. The state government will appoint a state CAMPA in each state. Next line. These funds will receive payment from three main sources. First, compensatory afforestation. Second, net present value of forests. Third, project specific payment. नेक्स्ट पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करना, उसको अंडरलाइन भी करना. नेशनल फंड will receive 10% from these payments, while as state fund will receive the remaining 90% from these payments. ठीक है. Now we'll move towards the current affairs portion.
Now tell me what is this body? हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। हमने ये बॉडी पढ़ी जिसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। नोट्स देखो, नोट्स देखो, अभी लिखे हैं ना 2-3 दिन पहले के। एग्जैक्टली ये एक पैनल है जो पब्लिश करती है रिसर्च एंड पब्लिकेशंस। इसी ने अपनी रीसेंट असेसमेंट रिपोर्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, फॉरेस्ट फायर एंड क्लाइमेट चेंज, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड इंक्रीज इन फॉरेस्ट फायर्स। जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे ही टेम्परेचर राइज हो रहा है, स्नो जल्दी मेल्ट हो रही है और फॉरेस्ट जल्दी सूखे हो रहे हैं। सूखी लकड़ी तेज जलती है, ठीक। तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज इन द टेम्परेचर is not only causing the snow to melt faster but also causing the forest to get drier for more period and causing the rain to be for less period. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि any spark, ठीक, with the increase in the temperature leads to forest fire, और फॉरेस्ट फायर रैपिडली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं और इंडिया में सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। और इंडिया में रिसेंटली फॉरेस्ट फायर हुआ था एमपी में, मध्य प्रदेश में, और द वर्स्ट फॉरेस्ट फायर जो हमने एक्सपीरियंस किया था वो था लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। वहां पे देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डैमेज बाय द फॉरेस्ट फायर, ठीक है। ये आईपीसीसी रिपोर्ट ने अभी कहा है किसमें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट फायर, ठीक है। राइट इट, बनाओ इसको। ये अभी रीसेंट रिपोर्ट है इनकी, जो इनकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट है। बना लिया ये, जल्दी करो, हम बहुत करंट अफेयर्स। नाउ राइट, फॉरेस्ट फायर्स also called as forest fires, also called as bushfire, क्या है कि कभी एमसीक्यूज में वो टर्म चेंज करके देते हैं, ठीक है, इसलिए कैन बी डिस्क्राइब्ड एज any uncontrolled and non-prescribed combustion or burning of plants in a natural setting, such as forest, grassland, bushland. Next para and mark it important. A total of, next para और इसको important mark करो, a total of 381 forest fires, a total of 381 forest fires
have been reported in India by 30th March 2022. By 30th March 2022, according to Forest Survey of India. Full stop. Madhya Pradesh, MP, Forest Survey of India. थोड़ा speed increase करो. Full stop. MP, Madhya Pradesh has recorded highest number of forest fire ranging to 133. The main reasons according to IPCC report are: first, increase in average temperature. Second, increase in intensity and duration of heat wave. Increase in intensity and duration of heat wave. Increase in intensity and duration of heat wave. Third, regional increase. Regional increase in frequency and duration of drought. Increase in frequency and duration of drought. इस रिपोर्ट में इन्होंने और भी जो चीज़ें लिखी है वो ये लिखी है कि 2010 से 2019 में
जो एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ग्रीन हाउस गैस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, रुका नहीं है। ठीक, ये लिखना है हमें, डोंट राइट। तो दूसरा इसने क्या कहा है कि एवरेज जो इंक्रीज है इस डेकेड में 2010 से 2019 में, वो अभी तक का किसी भी डेकेड में सबसे हाईएस्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर है। ठीक, और 10% ऑफ द हाउस होल्ड्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा करते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मतलब पर पर्सन ग्रीन हाउस गैस कितना निकालता है। यानी जैसे ऑक्सफैम इंटरनेशनल कहता है कि इंडिया का 1% के पास 80% दौलत है। इंडिया में 100 करोड़ की आबादी में, ठीक है, उसके 1% के पास उसकी 80% दौलत है। वैसे ही दुनिया में 10% लोग ही मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस एमिशन निकालते हैं। कैसे? यूरोपियन कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज, मैंने पहले भी कहा, उनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ ऐसे नहीं आती है। तो ये वही रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के 10% सबसे ज़्यादा पर कैपिटा करते हैं यूज ग्रीन हाउस गैसेस। एंड द लास्ट टेम्परेचर जो है वो 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने ही वाला है 2100 तक। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि JNK में एवरेज टेम्परेचर गर्मियों में मैक्सिमम 28-29 जाएगा तो 30, अब तो 35 भी जाता है। ठीक, तो वहां पे 2100 में एवरेज टेम्परेचर जो अभी है उसे 3.2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज ही रख लो। ठीक, मतलब ये नॉर्म बन जाएगा फिर कि गर्मियों में यहाँ पे 30 डिग्री तो जाता ही है, मैक्सिमम 40-45 तक जाएगा। ठीक, तो ये इंक्रीज होगा, ये इस रिपोर्ट ने कहा है। तो अब ये क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग्स आर द क्राइटेरिया दैट हैव बीन मेंशन्ड बाय IPCC इन दिस फाइनल असेसमेंट रिपोर्ट, और ये ऑप्शंस दे देते हैं। ठीक है, राइट इट डाउन। other findings and observation of IPCC's report. हाँ, नाउ फर्स्ट पॉइंट एज इट इज लिखो। टू 2010 to 2019 net anthropogenic greenhouse gas contribution continues to rise. ठीक है, सेकंड पॉइंट एवरेज, सेकंड पॉइंट एवरेज एनुअल ग्रीन हाउस गैस emission, average annual greenhouse gas emission during 2010 to 2019, higher than any previous decade. Third point, 10% of the household with highest per capita emission contribute 10% of the household with highest per capita emission contribute disproportionately
contribute disproportionately large share of of global greenhouse gas global greenhouse gas household emission. Next point, the global average temperature to increase to 3.2 degrees Celsius by 2100 without a strengthening of policies. डायग्राम बनाओ. ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स दे न्यूमेरिकल फिगर्स पूछते हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बनाओ. ये अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी की नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस 2019 में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा थी और किस में कम. ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर में, फिर इंडस्ट्रीज, फिर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड 5% फ्रॉम बिल्डिंग्स.
हो गया? गुड, फास्ट। देखो, अब अगर कोई भी आईपीसी रिपोर्ट आ गई आगे करंट अफेयर्स में, तो कैसे पढ़ना है वो आपको खुद देखना है। ठीक, ये अभी 6th असेसमेंट रिपोर्ट थी, 7th आएगी, 8th आएगी, 10th आएगी। जब भी आप प्रिपेयर करोगे तो ऐसे ही नोट्स बनाओगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आईपीसीसी रिपोर्ट क्या है, ठीक, उसका क्या काम है और उसको क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट जब भी आएगी न्यूज़पेपर में, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। ठीक, हो गए? एवरीवन, व्हाट इज दिस? ये बहुत न्यूज़ में आ रहा है, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। ठीक, एथेनॉल क्या है? एनीवन? एथेनॉल क्या है? क्या है? एनीवन? एथेनॉल, अल्कोहल, शराब, ठीक, एथेनॉल। तो अब मुझे एक बात बताओ, हियर मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दैट इन एथेनॉल इसके पास बर्निंग प्रॉपर्टी होती है, ये जलता है। और हमारे पास जो 4 स्ट्रोक इंजन है गाड़ी का, कार्बोनेटेड इंजन, ठीक, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो फ्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है? जलना, तो बर्न, तभी तो धुआं निकलता है। 4 स्ट्रोक इंजन में जब हम सिलेंडर में यहां तक फ्यूल आता है, स्पार्क प्लग होता है, वो स्पार्क क्रिएट करता है। ठीक, ये बर्न आउट होता है, उसकी वजह से जो पिस्टन है वो नीचे चला जाता है। मैकेनिकल इंजीनियर कोई नहीं है इस क्लास में? ओके, तो ये नीचे चला जाता है, फिर जब गैस रिलीज हो जाती है फिर से ऊपर चला जाता है। ये 4 स्ट्रोक। अब अगर मैं यही जलने को फास्ट करूं, ठीक, और इतना फास्ट करूं कि इसमें जो हार्मफुल केमिकल्स भी है वो कंप्लीटली कंबस्टल हो जाए, ठीक है, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाऊं, वो है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जिसके अंडर हम कंबस्शन प्रॉपर्टीज और पेट्रोल को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं। ठीक, और उससे जो पेट्रोल है उसकी डिपेंडेंसी कम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 80% पेट्रोल है, 20% तो एथेनॉल है, तो उतना कम पेट्रोल लगा ना, और उतना ज्यादा ब्लेंड भी हुआ। तो दिस प्रोग्राम जिसमें हम एथेनॉल मिक्स करते हैं टू इंक्रीज द कंबशन प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल, ताकि वो ज्यादा बर्न हो सके, कंप्लीटली बर्न हो सके, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। ये अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 2018-19 के आसपास, और उसमें हमने कहा था कि हम धीरे धीरे एथेनॉल की क्वांटिटी बढ़ाएंगे विद इन द पेट्रोल, और करंटली ये 20% है। ठीक, इसमें प्रोटेस्ट भी हुआ था, बहुत लोगों ने पेट्रोल दिखाया था और कहा था ये सफेद है, ठीक, लेकिन कंप्लेंट नहीं आई कि गाड़ी कम चली या कोई इंजन में कोई खराबी हुई। ठीक, इनफैक्ट कंबशन प्रॉपर्टी उसकी इंक्रीज ही हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर हमने ये किया तो रिलेटिवली पेट्रोल का प्राइस कम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ठीक, लेकिन अब हम इथेनॉल ही क्यों यूज कर रहे हैं? मतलब इथेनॉल का एज सच, एक तो कंबशन प्रॉपर्टीज अच्छी है, दूसरा इथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। जो शराब है ज्यादातर आपको पता होगा, इट माइट शो यू दैट कि ये कॉर्न से बनती है। ठीक, बैगेस यानी जो शुगर केन के वो चीजें उनसे बनी होती है। ठीक, लोकल शराब बनती है ना, देखा होगा, अक्सर मूवीज में दिखाते हैं दैट वो रेड पड़ती है कि ये लोग लोकल शराब पीते हैं। ठीक, तो वो हम लार्ज स्केल पे भी बना सकते हैं और उसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट जो हम एनर्जी रिसोर्सेज का ज्यादा कर रहे हैं ना, इट विल गेट रिड्यूस्ड और उतनी ज्यादा एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, दिस इज एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, राइट इट डाउन।
ethanol 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 is one of the principal biofuels, comma, which is naturally produced by the fermentation of sugar, by yeast microorganism. आपको कांदुर के पास मिल जाएगा, वो डालता है ताकि बिल्कुल सही. Full stop. Ethanol blending program aims at reducing the country's dependence on crude oil imports cutting carbon emission and boosting farmers' income. नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन भी करना. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has advanced the target for 20% ethanol blending in petrol to 2025 from 2030. यानी गवर्नमेंट ने कहा था कि 2030 तक हम 20% बनाएंगे, अब गवर्नमेंट कह रहे हैं 2025 तक ही हम करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज advanced the target for 20% ethanol blending in petrol to 2025 from 2030. Blending in petrol to 2025 from 2030. Next paragraph. To 2025 from 2030, मतलब 2030 तक हमने पहले बोला था, अब हमने कहा नहीं, हम 2025 तक ही करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ. नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स prioritizes grasses and algae, comma, cellulose material such as बैगेस मतलब जब गन्ने का रस निकालते हैं उसके बाद जो कचरा बचता है, ठीक, उसको कहते हैं बैगेस. ठीक. सच एज बैगेस फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन. But the new
ethanol blending target, but the new ethanol blending target primarily focuses on food-based feedstock in light of grain surplus grain surplus and widely available technologies. And widely available technologies. Everyone, what is Montreal Protocol? And what is it related to? Montreal Protocol. Ozone depletion. Even we studied Kigali Amendment. रिवाइज नहीं करते हो क्या? अब इंटरनेशनल डे फॉर ओजोन ठीक रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया. अब इसमें न्यूज ये है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ये रिलेटेड है. तो क्वेश्चन, क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ ओजोन हेल्ड हुआ, तो बैकड्रॉप में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो ये पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन वाज हेल्ड इन एंड व्हाट वाज इट्स थीम. ठीक, और फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, राइट. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसके नीचे लिखो. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? आई विल नॉट रिपीट दैट. जो करंट अफेयर न्यूज है वो मैं बोल रहा हूं. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंटरनेशनल डे for the prevention of for the preservation of sorry prevention नहीं preservation of International Day for the preservation of ozone layer was celebrated on अंडरलाइन करना 16th September 2022 with the theme Global Cooperation Protecting Life on Earth.
दो करंट अफेयर पार्ट क्लास हेयर, दो करंट अफेयर पार्ट वो मैंने आपको पहले ही करवाया है। शर्म अल शेख में हमने क्या कहा, इंडिया का अपडेटेड आईएनडीसी क्या है, ठीक है, वो दो पार्ट ऑलरेडी किया है। और उसके बाद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में रिसेंटली कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें हमने क्या कहा है वो भी हमने कर लिया है, ठीक है। हो गया।